بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss Physics Class 10 Federal Board Chapter number 18 Atomic and Nuclear Physics Conceptual Questions. Now question 18.1 है जी. Is it possible for an element to have different types of atom? Explain. Yes, an element can have different types of atom which have same atomic number but different mass number called isotope. जी हाँ, ये पॉसिबल है किसी एलिमेंट का डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो. ये किस बेसिस के ऊपर? आइसोटोप. आइसोटोप क्या होते हैं कि एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, इन एलिमेंट्स ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप. The isotopes are the atoms of an element that have same atomic number but different mass number. Atoms have same number of protons but different number of neutrons. Example, the isotopes of hydrogen are protium, deuterium, tritium. अब प्रोटियम में क्या है? मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है. ड्यूटेरियम में क्या है? मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है. ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है. Now question 18.2 है जी. Which nuclear reaction would release more energy, the fission or fusion reaction? Explain. Fusion reaction releases more energy than fission reaction. In a fusion reaction, two light nuclei merge to form a single heavier nucleus. The process releases energy because the total mass of a resulting single nucleus is less than the mass of the two original nuclei. The leftover mass becomes energy. फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? जो हमारे पास टू लाइट न्यूक्लियाई हैं वो मर्ज होते हैं टू फॉर्म सिंगल हैवियर न्यूक्लियस. The process release energy because the total mass of the resulting single nucleus is less than the mass of the two original nuclei. और जो हमारे पास पीछे बचे हैं मास वो एज एनर्जी रिलीज होगा. फ्यूजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन फिशन because there have been challenges around energy expended on creating the condition required for fusion, as it has been more than the amount of energy returned as a result. However, when these challenges are fully solved, fusion has the capacity to produce several times the amount of energy created by fission. That is why nuclear fusion is not currently used for power generation, as it is a difficult process to recreate and control as well as being expensive. This is due to the temperature required to overcome the strongly repulsive electrostatic forces between positively charged nuclei in order to allow them to collide and fuse. However, work is ongoing to overcome these challenges. यही वजह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम एज पावर जनरेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो उनका प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है टू रिक्रिएट एंड कंट्रोल और महंगा भी है. इसकी वजह क्या है? जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है टू ओवरकम स्ट्रांगली रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू अलाउ देम टू कोलाइड एंड फ्यूज. However, work is ongoing to overcome these challenges. साइंस जो है वो काम कर रही है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करके तो हम फ्यूजन रिएक्शन से पावर को जनरेट कर सकें. नाउ क्वेश्चन 18.3 which has more penetrating power, an alpha particle or gamma ray photon? Of the three types of radiation, alpha particle are the easiest to stop. A sheet of paper is all that is needed for the absorption of alpha rays. However, it may take a material with a greater thickness and density to stop beta particle. Gamma rays have most penetrating powers of all three radiation sources. जो gamma ray है among alpha, beta and gamma, उसकी जो penetrating power है वो तीनों rays से बहुत ज़्यादा है. So gamma ray photon have more penetrating power than alpha or beta ray. Reason क्या है जी? The great penetrating power of gamma rays stem from the fact that they have no electric charge and thus do not interact with matter as strongly as do charged particles. जो
पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता कि वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें जैसे कि अल्फा और बीटा रेज कर सकती हैं। नाउ क्वेश्चन 18.4 है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या है जी? इज द फॉर्म ऑफ रेडियोएक्टिविटी दैट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन इन नेचर, द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी इंड्यूस्ड बाय मैन इन लेबोरेटरीज। जो खुद ब खुद रेडियोएक्टिविटी है वो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है, और जो मैन लेबोरेटरीज के अंदर करते हैं वो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी होती है। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जबकि आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। Most of time process cannot be controlled, process can be controlled. Example, radon is an element that naturally forms a radioactive dust. Example, an artificially radioactive isotope of cobalt is used to treat some type of cancer patient. Now question 18.5 है जी, how long you are likely to wait to watch any sample of radioactive atom complete decay. Radioactive decay according to their half-life, and they become half and half as their half-life passes, thus it would take infinite time to decay completely. Question 18.6 है जी, which type of radioactivity leaves the number of proton and neutron in the nucleus unchanged. जो हमारे पास गैमा डिके होता है वो क्या करता है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस अनचेंज। जनरल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? X है विद मास नंबर A एंड एटॉमिक नंबर Z। जब वो गैमा डिके करेगा तो हमारे पास मास और एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, प्लस गैमा एमिट होंगे और प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन सेम। नाउ क्वेश्चन 18.7 है जी, हाउ मच 1 gram sample of pure radioactive substance would be left undecayed after 4 half life. 4 हाफ लाइफ के बाद जो 1 ग्राम है सैंपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस वो कितना बाकी बचेगा हमने वो बताना है। जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगा? 1/2। जब दूसरी गुजरेगी तो वो हो जाएगा 1/4। जब तीसरी गुजरेगी वो हो जाएगा 1/8, और जब चौथी गुजरेगी तो वो हो जाएगा 1/16। n equal to n naught into 1/2 पावर n। ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ का। n क्या है? मास ऑफ एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड। n नॉट है जो ओरिजिनल मास ऑफ एलिमेंट। n क्या है जी? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। गिवन क्या है जी? n ओरिजिनल मास ऑफ एलिमेंट 1 ग्राम है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है। फाइंड क्या करना है हमने? n फाइंड करना है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ n नॉट एंड n इन द अबव फॉर्मूला, n इक्वल टू 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 4, तो 0.0625 ग्राम हमारे पास लेफ्ट अनडिकेड रहेगा आफ्टर 4 हाफ लाइफ। नाउ क्वेश्चन 18.8 है जी, ट्रिटियम H31 is a radioactive isotope of hydrogen. It decays by emitting an electron. What is daughter nucleus? जब ट्रिटियम ने इमिट की बीटा रेडिएशन, उसमें क्या होगा? हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर देगा बाय 1, और मास नंबर जो है वो रिमेन सेम। जब ट्रिटियम इमिट करेगा बीटा रेडिएशन तो हमारे पास आ जाएगा हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 3। द हीलियम न्यूक्लियाई इज अ डॉटर न्यूक्लियाई फॉर द बीटा रेडियोएक्टिव डिके ऑफ ट्रिटियम। Now question 18.9 है जी, what information about the structure of nitrogen atom can be obtained from its nuclide N147? In what way atom in N147 is different from the atom in N167? Information from nitrogen nuclide N147, atomic number और number of proton 7 है, number of electron 7 है, mass number है 14, number of neutrons हो जाएंगे 14 minus 7 7। Nitrogen N167 has atomic number 7, number of electrons 7, mass number 16, number of neutrons 16 minus 7 9. Both the nitrogen nuclide has the same number of proton on electron but different number of neutrons. Now that's all about conceptual questions of chapter number 18. Thanks for watching.
Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we'll discuss chapter number 18, Atomic and Nuclear Physics Numerical Problem Questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.